हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे कंप्यूटर एप्टीट्यूड के इंटरनेट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो 50 क्वेश्चंस हैं। ओके, देन इसके बाद अपन एक्सपेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी यहाँ पे लेने वाला है। अभी जो सेकंड पेपर जो आएगा वो आएगा अपना मॉक पेपर 2। ओके, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको डायरेक्टली जो वीडियोज है वो डायरेक्टली मिल जाए। ओके, अब यहाँ पे जो अपना पेपर है वो 4 to 8 रहने वाला है, उसके हिसाब से मैं प्लान कर रहा हूँ। डेली जो है मोस्ट ऑफ द टाइम मैं मॉक पेपर भी यहाँ पे अपलोड करूँ। ओके, ताकि और भी आपको प्रैक्टिस हो जाए। और जिनको भी रीजनिंग प्लस मैथ्स की अगर थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करना है तो मैं NICL की भी एक प्लेलिस्ट बना चुका हूँ। वहाँ पे भी मेरे कुछ वीडियोस है, तो आप इम्पोर्टेंट MCQs वहाँ से देख सकते हो ताकि आपकी और भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अपना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। तो सिक्योर कनेक्शन अगर देखते हैं तो वो है अपना HTTPS। ओके, देखिए, hypertext transfer protocol secure is the secure version of HTTP using encryption to secure communication over the internet. Okay, next, second, which of the following is not example of DNS record type? तो DNS मतलब यहाँ पे क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम। ओके, तो डोमेन नेम सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डोमेन्स होते हैं जिसमें अपन SSL सर्टिफिकेट का सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ओके, तो SSL इज नॉट अ DNS टाइप बट रेफर्स टू द सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। ओके, नेक्स्ट, third, which layer of the OSM model is responsible for establishing, managing and terminating communication session? यहाँ पे देखिए चार लेयर्स है अपने पास OSM मॉडल के, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर एंड डेटा लिंक लेयर। तो अगर कोई भी कनेक्शन अगर एस्टेब्लिश करना है, टर्मिनेट करना है, मैनेज करना है तो उसके लिए अपने पास होती है सेशन लेयर। ठीक है, देखिए, द सेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग सेशन, दैट इज एस्टेब्लिशिंग, मेंटेनिंग एंड टर्मिनेटिंग कम्युनिकेशन बिटवीन applications. Okay, next, fourth, what does the term IP spoofing, okay, IP spoofing refers to? तो आंसर है hiding the origin of data packets। ठीक है, IP spoofing involves altering the source of IP address of packet to make it appear if it originated from trusted source। Okay, next, fifth, what is the maximum transmission speed of typical internet network in modern LAN? तो अगर देखते हैं तो LAN में 1 Gbps। ओके, तो मॉडर्न इंटरनेट नेटवर्क टिपिकली ऑपरेट स्पीड ऑफ 1 Gbps मतलब गीगाबिट पर सेकंड। ओके, नेक्स्ट, 6, which protocol is used to assign dynamic IP addresses to device in a network? तो आंसर है DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol। Okay, is automatically to assign IP to address to device on network। Okay, next, 7th, which of the following is a feature of IPv6 and IP over IPv4? तो इज द लार्जेस्ट एड्रेस स्पेस है IPv6 की, और IPv4 की थोड़ी कम है। IPv4 जो है वो 32 बिट लेता है और IPv6 जो है वो 128 बिट एड्रेस स्कीम प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट, 8, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ARP मतलब एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल? तो इसका आंसर है रिजॉल्विंग IP एड्रेस टू MAC एड्रेस। ठीक है, देखिए, ARP मैप एन IP एड्रेस टू MAC एड्रेस विद लोकल नेटवर्क enabling communication at a data link layer। Okay, next, 9th, which of the following is a fundamental difference between HTTP and HTTPS? तो आंसर है HTTP use SSL और TLS for encryption। देखो, HTTP is a secure version of HTTP using SSL and TLS protocol to encrypt the data between the client and server। Next, 10th, विच इज द मेन फंक्शन ऑफ कॉन्टेक्स्ट डिलीवरी नेटवर्क मतलब CDN। तो CDN क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है कंटेंट्स को। ओके, देखिए, डिस्ट्रीब्यूट द कंटेंट्स ऑफ यूजर बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल लोकेशन, और CDN कैच डिलीवर कंटेंट्स यूज बेस्ड ऑन देयर लोकेशन इंप्रूविंग लोड टाइम एंड परफॉर्मेंस। ओके, नेक्स्ट, 11th, which of the following is the primary purpose of BGP border gateway protocol? तो इसका आंसर है राउटिंग बिटवीन द डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम ऑन द इंटरनेट। ठीक है, देखिए, BGP इज द प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर राउटिंग डेटा बिटवीन द डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम ऑन द इंटरनेट। ओके, नेक्स्ट,
12th, in an IP address, how many bits are used for network option? तो आंसर है 64 bit. ओके, देखिए IPv6 network partition typically use 64 bit, leaving 64 bit for the host portion of the address. Okay, next 13. What is the main difference between TCP and UDP? TCP and UDP का main difference क्या है? TCP is more reliable than UDP. TCP का full form क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड UDP का है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल. ओके, नेक्स्ट. What is encryption algorithm is commonly used for securing HTTPS connection? तो आंसर है RSA. Revised Shamir Endelman is widely used for asymmetric encryption algorithm that secure data during HTTPS transaction. Okay. Next, 15. Which protocol is responsible for reliable delivery of packets in network? तो आंसर है TCP. ठीक है, TCP ensure the reliable delivery of packets implementing mechanism like acknowledgement and retransmission. Okay. Next, 16. Which of the following is a common attack vector in DOS? Denial of the service. तो इसका आंसर है IP spoofing. ओके, देखिए इन DOS अटैक, attacker may use IP spoofing to discuss the origin of malicious traffic and overwhelm the target. Okay. Next, 17. अब बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल यूज कंसेप्ट ऑफ स्टेट इन कनेक्शन मैनेजमेंट. तो आंसर है FTP. ओके, देखिए FTP मींस फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, use the state active and passive for managing the connection between the client and server. Okay. Next, 18. Which type of IP address is used for communication with the private network? तो आंसर है private IP address. ठीक है, देखिए private IP address used with the local network and are not routable over the internet. Okay. Next, 19. Which of the following is a feature of DNS means domain name system? तो domain name system का concept क्या है? Convert domain name to IP address. DNS resolve human readable domain name into the IP address, enabling routing to the connect server. Okay. Next, 20. What is the purpose of NAT, network address translation in network? तो आंसर है to translate between private and public IP address. ठीक है, देखिए NAT allows device with the private IP address to communicate with the internet by translating their private IP into the public one. Next, 21. Which technique is used to prevent unauthorized access to the network by monitoring incoming and outgoing traffic? तो आंसर है firewall. ठीक है, the firewall monitor and control incoming and outgoing traffic based on predetermined security rules. Okay. Next, 22. Which of the following is the characteristics of मेथन क्या है मैनिथ मिडल अटैक? ओके, तो देखिए यहाँ पे मैनिथ मिडल अटैक जो है इट ऑकर्स व्हेन अटैकर इंटरसेप्ट कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज. ठीक है, देखिए द मैनिथ मिडल अटैक, द अटैकर इंटरसेप्ट and possibly alter the communication between the two parties without their knowledge. Okay. Next, 23. Which of the following is used to increase security by providing single entry point to network? तो आंसर है VPN, virtual private network. ठीक है, देखिए VPN encrypt the communication between the user and the network, providing secure access and acting as a secure gateway. Okay. Next, 24. Which of the following is a valid IP address? IPv4 address. तो आंसर है 172.16.0.1. The valid IP address consists of 4 octet ranging from 0 to 255, and 172.16.01 is a valid IP address. Okay. Next, 25. Which of the following is the primary function of TCP? Three ways handshake. तो TCP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. It establish a reliable connection between the client and server. The three-way handshake is used to TCP to establish reliable connection between the client and server by exchanging synchronization and acknowledgement messages. Okay. Next, 26. What is the primary main purpose of proxy server? तो proxy server का main primary purpose क्या है? To
to act as an intermediary between client and the internet. Proxy server act as a gateway between the client and internet, providing security, privacy, and content filtering services. Okay. Next, 27. Which of the following is potential consequence of DDoS? Means distributed denial of service attack. तो यहाँ पे आंसर है unavailability of target web services. ठीक है. In DDoS attack, the attacker flood the target server with excessive traffic, causing it become the unavailable to legitimate user. Okay. Next, 28. Which of the following is the purpose of ICMP protocol in Internet Protocol? So answer है to provide error message and diagnostic tool. तो ICMP मतलब Internet Control Message Protocol is used for network diagnostic and error reporting such as ping command. Okay. Next, 29. What is the purpose of SSL TLS protocol in online communication? तो इसका जो आंसर है वो है to provide security through encryption for data transmission. देखिए, SSL TLS protocol are used to encrypt data exchange between web browser and server to ensure privacy and security. Okay. Next, 30. Which of the following address is a part of IPv6 address space? तो आंसर है देखिए यहाँ पे 2001 कोलन. ओके. तो ये जो आईपी एड्रेस है ये क्या है? IPv6 है क्योंकि इसका जो बिट है वो सबसे लॉन्ग है, इसलिए इसको बोलते हैं अपन 128 बिट लॉन्ग आईपी एड्रेस. तो IPv6 का एड्रेस इतना ही बड़ा आता है और IPv4 अगर देखते हैं तो वो 64 बिट का होता है. ओके. नेक्स्ट, 31. Which of the following is the key advantage of CDN, content delivery network? तो इसका आंसर है reduce the load on single server by distributing contents. Okay. देखिए, a CDN distribute content across multiple server worldwide, which reduce load time and server strain for end user. Okay. Next, 32. What is the purpose of DMZ, means demilitarized zone in network security? तो आंसर है to separate different network to enhance security. A DMZ is used to isolate an organization internal network from untrusted external network, providing an additional layer of security. Okay. Next, 33. What is the main advantage of using IPv6 over IPv4? तो आंसर है IPv6 has larger address space. ठीक है. 128 बिट होती है और जो IPv4 होती है उसकी 32 बिट एड्रेस स्पेस होती है. ओके. नेक्स्ट, 34. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डेफिनेशन फॉर लेटेंसी इन नेटवर्क टर्म? तो लेटेंसी मतलब क्या होता है? अ टाइम इन टेक फॉर डेटा पैकेट टू ट्रैवल डेटा सोर्स टू द डेस्टिनेशन. ओके. नेक्स्ट, 35. What does the term bandwidth refers in the network? तो bandwidth मतलब क्या होता है? The total data transfer rate of network connection. Okay, देखिए, the bandwidth is the maximum amount of data that can be transferred over network connection in the given amount of time, usually measured in the bit per second. Okay. Next, 36. Which of the following is the best describe zero day exploit? तो zero day exploit मतलब क्या? An exploit that use known for vulnerability for which there is no patch 8. Okay, देखिए, zero day exploit occurs when the hackers take advantage of previously unknown vulnerability that has known available fix or patch. Okay. Next, 37. Which of the following describe botnet in cyber security? The botnet मतलब क्या? A network that compromised device used to carry out large scale attack. Okay, देखिए, the botnet consists of compromise controlled by the hacker to perform malicious activities such as DDoS attack or spamming. Okay. Next, 38. What is the main function of ping command in networking? तो ping command टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं अपन to test the reachability of device or server on network. Okay. Next, 39. Which of the following is the key difference between IPv4 and IPv6? तो IPv4 ये जो है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट होता है और IPv4 ये डेसिमल फॉर्मेट में काम करता है. ओके. नेक्स्ट, 40. Which of the following is the example of hybrid cloud deployment model? तो hybrid cloud deployment मतलब क्या? A mix of private and public cloud. उसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे? Hybrid. ओके. नेक्स्ट, 41.
What does DNS catching refers to? The DNS मतलब domain name system. Okay, storing DNS record temporary to reduce the time needed the subsequent queries. Okay, next 42. What is the purpose of VPN? Virtual Private Network. तो इसका जो पर्पज है वो क्या है? टू क्रिएट अ सिक्योर कनेक्शन ओवर अ पब्लिक नेटवर्क. देखिए यहाँ पे क्या बोला है? VPN create a secure and encrypted connection between the user device and remote server, allowing safe communication over the public network. Okay. Next, 43. Which of the following describe load balancing in the context of networking? तो load balancing मतलब क्या होता है? Distributing data evenly across different server to optimize resource use and prevent overloading. Okay. Next, 44. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्राइब एज अ फायरवॉल? तो फायरवॉल क्या है? एक टाइप का सॉफ्टवेयर है जो फिल्टर करता है ट्रैफिक एंड सिक्योरिटी रूल्स को. तो देखिए, अ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिवाइस यूज्ड टू फिल्टर ट्रैफिक बेस्ड ऑन प्रीडिफाइंड सिक्योरिटीज. ओके, देखिए, फायरवॉल इज यूज्ड टू मॉनिटर एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक based on security rule to protect network from unauthorized access and threats. Okay, next 45. What does the term network topology refers to? तो network topology मतलब क्या होता है? The physical and logical layout of network device and connection. Okay, देखिए, network topology refers to arrangement or layout of device in network, including physical and logical connections between them. Next, 46. What is subnetting in the context of IP addressing? तो इसका आंसर है dividing a large network into smaller, manageable and subnetwork. Okay, देखो, subnetting is a process of dividing large network into smaller subnetwork to improve efficiency, security and management. Next, 47. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर? मतलब जैसे अगर देखते हैं यहाँ पे देखो, तो वो कौन है? Amazon वेब सर्विसेज, AWS. तो क्या? AWS is a public cloud which provider that offers wide range of computing services over internet to business and individuals. Okay. Next, 48. What is the role of SSL certificate in website? तो वेबसाइट के लिए SSL सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंस होता है to provide a secure connection by encrypting data exchange between the website and the users. Okay. Next, 49. What is the purpose of ICANN? Means Internet Corporation for Assign Name and Number. तो इसका आंसर जो है वो है assign and manage domain name and IP address. Okay. Next, 50. What is the primary function of TCP/IP protocol stack? तो इसका आंसर है to manage the flow of data over the internet. देखिए, TCP/IP protocol stack define how transmitted data over internet, including routing, addressing and ensuring data delivery. Okay? नेक्स्ट जो रहेगा वो अपना मॉक पेपर 2 रहेगा. देन उसके साथ अपन फिर इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड भी जल्दी ही सॉल्व करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू.